About a month and a half ago, they not only lifted the World Cup, but they rewrote belief. They carried expectations, pressure, and a billion hopes and turned that into history. Today, the headlines have moved on, the hype has softened, but the story and the journey continues. It's my absolute pleasure that today I am in this special conversation with the Indian Women World Cup winning team. I have the pleasure to introduce to all of you Harmanpreet Kaur, the captain of the team. Harman, welcome and thank you for coming here. And of course, the coach, the head coach of the team, Amol Mazumdar. Sir, thank you so much. Pleasure. And the all-rounder, Deepti Sharma, who can forget her World Cup winning performances. Welcome, Deepti. Thank you. And the live wire of the team, some people say she's also the chatterbox and the boombox, Jemima Rodrigues. Jemmy, welcome. Thank you so much. And you know, we want to discuss first of all from all of you. Like I said, the headlines have moved on. लेकिन क्या कुछ बदला है हरमन इस 1.5 महीने में अगर आप उससे हमें बता सकें आई थिंक फॉर अस हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट टैग कि कब हमें लोग वर्ल्ड चैम्पियन बोलेंगे आई थिंक वो टैग अभी लग गया है और उस टैग के लिए वी वर्क रियली हार्ड सो आई थिंक द बिगेस्ट चेंज विच आई फील पर्सनली दैट इज़ यू नो carrying that tag and now I know expectations are going to be there but yeah the way we have been working hard we just want to keep doing that and keep bringing more happiness to our country. जो आपने बोला कि now the expectations are different altogether from a team which was sometimes even doubted ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लास्ट स्टेप पे जाके फॉल्टर कर जाएंगे टू अ टीम नाउ विच कैरीज दिस प्रेशर कि अब ये जहाँ जाएंगे ना इन्हें अपनी वो वर्ल्ड कप वाली जो विनर वाली एक छाप है वो छोड़नी होगी अब थोड़ा ज़्यादा हैवी लग रहा है या इट्स मोर रिलैक्सिंग नहीं आई थिंक इट्स मोर रिलैक्सिंग क्योंकि इससे पहले वी वर एवरी टाइम वी वर क्लोज टू आर टारगेट बट फॉर सम रीजंस हम वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बट नाउ हमने जितने भी हमारे हर्डल्स थे उनको क्रॉस कर लिया है नाउ वी नो हाउ इट फील्स आफ्टर बिकमिंग वर्ल्ड चैम्पियन और आफ्टर विनिंग अ बिग ट्रॉफी सो आई थिंक नाउ इट फील मोर रिलैक्स नाउ आई पर्सनली फील नाउ तो वी हैव टू गो ऑल आउट वेर एवर वी गो वी जस्ट हैव टू इन्जॉय सेल्फ बिकॉज अभी वो जो बर्डन था वो चला गया क्योंकि इतने सालों से वी हैव बीन वर्किंग हार्ड बट वो लाइन क्रॉस नहीं हो रही थी अब तो वो लाइन क्रॉस हमने कर लिया अब नाउ वी नो कि उस लाइन को क्रॉस करने के लिए कितना हार्ड वर्क लगता है कितना मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर सो नाउ व्हेन वी नो व्हाट वी हैव टू डू टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन नाउ इट्स ओनली अबाउट कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स इन आवर लाइफ अमोल हार्ड वर्क एक तरफ लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो जो इंटेंट चाहिए होता है ना कि करो या मरो करना ही है इसके अलावा और कोई चारा नहीं है क्या वो इंटेंट इस टीम को अलग करता है इनसे पहले जो टीम्स आई उससे I think so. Just the way they played their cricket throughout the tournament. Not just this tournament. This tournament was a result of a lot of hard work, as Harman did mention. But the series prior to it, that gave us belief that we can win from any situation against any opposition. And I think 3 things that describe this team, I feel, is one is discipline, their courage to dream big and their hard work. So I think these 3 elements are fantastic in this team and that's the reason why we were able to lift that World Cup trophy. No, Amol, you were watching them from close quarters, but we were all sitting outside. What we also noticed was that, the girls are very hardworking and they were doing well. Then we saw a bit of a dip in between when we lost 3 matches back to back. But the clarity that we are here to do something and this is our best chance and the adaptability because Pratika Rawal suddenly was out of the picture then you have Shefali coming in and she adapted to the team so beautifully. I'm sure all these girls worked really hard to make that possible for her. That adaptability was unique, wasn't it? Absolutely, and that's what good teams do, I guess. There were a lot of challenges throughout the tournament. We had 3 losses in between, then we had an injury scare. We had to deal with a lot of things. Yeah. But as good campaigns, are there are a lot of dip in the form, and then suddenly there was a spike. So I guess everything, as they say, all's well that ends well. So I guess there were challenges, but we met it with a lot of
hard work and determination. Yeah, I think that determination really showed in all of your performances. दीप्ति, अगर आपके रोल की स्पेसिफिकली बात करूं तो ऐसा लगता है कि हर मैच के साथ आपका रोल इवॉल्व हो रहा था. कितना ज़रूरी है एक खिलाड़ी के लिए ये क्लैरिटी होना कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस टीम में? देखिए, मेरी तो हमेशा जब भी बैटिंग आई हो या बॉलिंग आई हो, हमेशा एक चैलेंजिंग वाला जब एक मोड रहता है हमेशा तभी आई है, और उससे मैं काफ़ी कुछ सीखती भी हूँ अपने हर एक मैच से. लेकिन चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है उस मोमेंट पे जब आप परफॉर्म करते हो टीम के लिए, और स्पेशली जब रहता है कि टीम को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आप अगर क्लिक होके आते हो, स्टेप अप करते हो, तो आई थिंक वो मुझे मोड सबसे अच्छा लगता है. Jemmy, if I could ask you, you bring a lot of energy. Your personality is such. It's packed with energy. That's what we see on field also. But was there any moment during the World Cup in any particular match where you thought that I have to rein myself in and just focus on entirely my cricket and, my style instead of letting this energy boil into something which will be uncontrollable? Has there ever been that sort of an instance? No, because I think, yes, I have my energy, but Sir keeps saying that your energy is also what drives and rubs off of everyone in the team, especially in the fielding. And it's how you use that energy to your advantage. And also at the same time, I think when I walk in on the ground, I'm a different person. I think my teammates make fun of me that, sometimes it's hard to talk to Jemmy because she's so focused and so serious. Oh. But I think, yeah, that's me. When I'm on the ground, I'm there and I'm 100% there. And it's also about how I balance that energy, and I use it to my advantage. So I think that always gets the best out of me, and I think one of my superpowers, I know how to switch on and switch off, and that really helps me. And what's the biggest compliment that you have got after your team lifted the World Cup? Not from any Indian cricketer or any Indian fan, but from opponents. Any compliment that has stayed with you, that really lifted you, that wow, they were watching? Yeah, actually, I remember after playing the semi-finals, we were practicing and even the South African team were there. So literally 4-5 of them came up to me and just hugged me. I mean, we are rivals, we are going to play the finals next. But they just hugged me and they said, we are so proud of you, but more than that, for just being your vulnerable self, because most of us go through the same thing. But for you to come out and speak about it, it speaks a lot about your character and how courageous you are. And I think that made me realize because I didn't realize the impact I had, because honestly at that moment I was so emotional and I just spoke from my heart. It was very raw. But to know later on the kind of impact it had, I think that would stay with me. Wow. Harman, in fact, this is what everyone is talking about. एक तरफ है कि भारत में women's cricket को नई जान मिली है आप लोगों की जीत के साथ, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में women cricket ओवरऑल जो ग्लोबली खेला जा रहा है उस पे भी इंडिया की इस जीत का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है. क्या आपको वो फीडबैक मिला है बाकी ओपोनेंट्स से? आई थिंक इस जीत के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, एंड आई एम श्योर ग्लोबली भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है. येस, वी कीप गेटिंग मैसेजेस के ये विन के लिए सिर्फ वी वर ओनली नॉट ड्रीमिंग. मैनी पीपल इन अ कंट्री और इवन आउट ऑफ अ कंट्री दे वर होपिंग के इंडियन विमेंस टीम का वर्ल्ड कप जीतेगी. सो आई थिंक उसके साथ साथ ग्लोबली भी इज़ गोइंग टू अफेक्ट, और होपफुली जैसे अभी वी जस्ट गॉट टू नो कि अभी आईसीसी इवेंट्स में और भी टीम्स ऐड होने वाली है. तो दैट शोज़ के जब इंडियन विमेंस क्रिकेट इम्प्रूव करती है या फिर कुछ अच्छा खेलती है तो उसका वर्ल्ड पे कितना इम्पैक्ट होता है. तो वो चीज़ें हमेशा हमारे माइंड में रही हैं कि वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर, नॉट ओनली ब्रिंगिंग बेस्ट फॉर आवर कंट्री, बट अगर हम अच्छा करेंगे तो ग्लोबली भी वी कैन पुट लॉट ऑफ इम्पैक्ट. सो आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड कप, येस, इट डिड अफेक्ट एंड इन अ पॉजिटिव वे. सो आई होप कि हम लोग ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहें और अच्छे मैचेस कंट्री के लिए जीतते रहे, सो दैट वी कैन सी इवन ऑल ओवर वर्ल्ड गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट. हरमन, आपने ना एक पूरा दौर देखा है वुमेन्स क्रिकेट का इंडिया में. 2017 में यू केम सो क्लोज एंड येट कुड नॉट क्रॉस द हर्डल. जो आज कंपैरिजन्स हो रहे हैं ना कि कपिल देव के 1983 वर्ल्ड कप विनिंग से जो मेंस क्रिकेट को फिलिप मिला, वही वुमेन्स क्रिकेट को इस 2025 के वर्ल्ड कप कैंपेन से मिला है. आपके केस में स्पेसिफिकली एक लेजेंड से कंपेयर बहुत पहले से किया जा रहा था. वो 2017 वाला नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसे भी कंपेयर किया जा रहा था, कपिल पाजी के नॉक से ही कंपेयर किया जा रहा था. ये कंपैरिजन को आप कैसे देखते हो?
या आई थिंक आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप के बाद ही काफ़ी सारे टॉक्स थे मेरी उस इनिंग को लेके, और अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो आई थिंक कपिल सर का काफ़ी कनेक्शन रहा है हमारी विमेंस क्रिकेट के साथ. तो या आई मीन इट अच्छा लग रहा है बिकॉज पर्सनली वी वर्क रियली हार्ड फॉर दिस, और आज उसके लिए पूरी कंट्री अप्रिशिएट कर रही है. People want to know what we have done all these years and how we worked hard, what planning and everything. They just want to know. They want to listen from us. So I think it shows कि we are doing the right things, और now it's only about keep repeating those things in our future. या दीप्ति, हरमन को तो काफ़ी टाइम से ये एक्सपोजर मिल रहा है मीडिया इंटरेक्शंस का, इंटरव्यूज़ का, फ़ोटोशूट्स का. अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो वो जो हमने टाइटल लिफ्ट किया नवंबर के पहले 2 दिन के अंदर अंदर और यहाँ तक इस 1.5 महीने में आपके लिए ये सब कितना बदला है और आप कैसे कोप कर रहे हो? द ग्लैमर, द हेडलाइंस और सारी जो अटेंशन आपकी तरफ आ रही है. आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड कप लग रहा है कि हमने वाकई में कुछ अचीव करा है, क्योंकि एक यही चीज़ थी जिसका थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी इसको भी मैं इंजॉय कर रही हूँ और हेयर एंड देयर जाना पड़ रहा है, इवेंट है, शोज़ है, तो मीन्स इसको मैं इंजॉय कर रही हूँ. और आई थिंक हमने ये अचीव करा है तो इट्स अ बिग थिंग, और हम चाहेंगे कि इसको आगे और ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करें. सो और सारे हम लोग shows and events करें. Of course, and we are very, very honored that we are also getting a chance to talk to all of you. But Jemmy, isn't this also something that young girls should take away from your win? That with the limelight, with the win comes the limelight. With the limelight comes more responsibility, but also more exposure. You know what these girls are doing. You know how hard they've worked, and I think this message was very important to be sent across. Yeah, 100%. I don't think anyone's an overnight success. Like Sir was saying, we started our preparations way back. And before that, Haridi has been playing for so many years together. And before her, there have been generations playing and, trying to get women's cricket in India to a level, I think, where it is today. And it's only going to get better. But with that limelight, like you said, there comes a lot of added responsibility. And I feel that responsibility is also a motivation for us to keep working harder. Yeah. In fact, just yesterday we had a team meet and Amol sir said, this is just the beginning. We can't stop here. I think what we've started, it's just the start. We need to keep working harder and push the bar higher. Yes. And I think that's what our team is working towards. And I think that's what also sets this team apart, because no one's satisfied. Yes, we did win a World Cup, but we know we have to win World Cups. Yes. And that's the entire goal. So the key to that is just keep working hard and seeing how you can improve little by little by little, because that never stops. I love that attitude, and that's why I said in the beginning also, the journey continues. The headlines may have softened, but the story will continue. Amol, from you, I want to know how difficult or easy it is to work with our women cricket team. And Jhoot bolo sir. And from preparation Very point easy. of view, from preparation point of view, boys do indulge in a lot of bhai talk, easily backslapping and easy conversations. With girls, there are some boundaries that you have to keep in mind, or you are bindas with them also. How do they take you as their coach? To be very honest, when I took up the job, I didn't see it as an Indian women's cricket team. Yeah. I just saw it as I'm serving Indian cricket with whatever capacity they would appoint me to. So, that's the bottom line where I started from. There was no differentiation between men's cricket and women's cricket. I only thought about Indian cricket. That's lovely. Getting into the job, I learned a lot over the years that, there are certain things where you got to adjust to the role, as every job has got it. So it had its own challenges, and you just had to meet them. And to be very honest, I'll say this, that coaching a women's team, this Indian women's cricket team, was much easier. Honestly. And it's not because Jemmy has told me to lie, but it's not just because Jemmy has told me to lie. Partnership with Amol Muzumdar. But it has really been a riveting experience for me in the last 2 years. हरमन सच बोला सर ने, झूठ बोला है? नहीं सर ने सच बोला. Even we worked with so many coaches, but working with sir was so easy.
मतलब कभी ऐसे लगा नहीं कि किसी चीज़ के लिए भी मतलब कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या फिर यहाँ पर डिसीजन आर्गुमेंट तो होते होंगे नहीं, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन ज़रूर होती है, लंबी भी चलती है, समटाइम्स आर टीम मीटिंग जस्ट कीप गोइंग ऑन, बट वी ऑल कम टू द पॉइंट जो टीम के लिए अच्छा होता है, टीम के लिए बेस्ट होता है. बट आई थिंक इतने सारे कोचेस के साथ काम करा, बट सर के साथ वी रियली enjoy with this entire sports staff. They have something very special, or they make sure that everyone in the team smiling, they are giving their best, they are in their zone. So I think that is very important, because all 15 members, they are different. They have different things to see, but I think sports staff, they really took care of us during our good and bad days. So I think I always give them a lot of credit, and because they deserve नहीं, this आप दोनों ने credit. ना टीम लीडर्स वाले रोल में पूरा जवाब दे दिया है. दीप्ति, मुझे आपसे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए. जब कुछ गड़बड़ होती है, अरे मैंने सच बोला है. हंस भी रही है. जब कुछ गड़बड़ होती है, डांटता कौन है ज़्यादा इन दोनों में से? सच बताओ. नहीं, देखो जो भी होता है ग्राउंड पे ही हो जाता है. और तो ग्राउंड पे हरमन डांट देती है मेरे ख्याल से. नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है. वैसे वो बहुत अच्छे उतना नहीं डांटते हैं जितना लोगों को देखने में लगता है, लेकिन ऑफ द फील्ड तो और भी ज़्यादा स्वीट है वो. ओके जेमी, वुड यू ऑल्सो से दैट दोनों में से डांटता कौन ज़्यादा है? No, I don't think anyone shouts at us. We just शाउटिंग नहीं, मतलब डांटना. डांटना and shouting नहीं is नहीं, same, no? शाउटिंग कैन बी अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल, बट डांटना, आराम से बोलना, यार जेमी व्हाट वाज दैट? No, see, when you're on the ground, it's the heat of the moment. And at that time, everyone cares about the team and doing well. So what happens in that moment, like Dipti said, it stays on the ground. It doesn't carry forth the next day, oh, this has happened, that. Because we all know whatever is going to happen, whatever discussion. And it's not just Harry the also. We are humans. We also are in that moment where we get a little aggressive too. But it just stays on the ground and nobody carries it forth and they take it in the right spirit. So I think that's what a team does. And if we don't have that, then I don't think, then we are doing something wrong. Then there's something wrong. Yeah. Absolutely. So Harman, final words to the captain. अभी ICC इवेंट्स और भी बहुत सारे बाकी हैं, और जैसा कि आपने बोला, एक्सपेक्टेशंस आपकी टीम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. व्हाट वुड बी योर फाइनल मैसेज टू द फैंस सिटिंग हियर? टू द फैंस, आई थिंक ये वर्ल्ड कप ज़्यादा स्पेशल रहा बिकॉज उन्होंने स्टेडियम पूरे पैक कर दिए थे, एंड आई थिंक आवर टीम रियली एन्जॉय व्हेन दे कम एंड वॉच अस, दे चीयर फॉर अस. सो मैसेज तो यही है कि जस्ट कीप कमिंग, कीप वॉचिंग विमेंस क्रिकेट. आई नो योर सपोर्ट इज मीन्स अ लॉट टू अस. So I always tell this is your team. So please come support and cheer for Indian women's cricket team, because we really want to see many girls playing for our country and taking this game even more, to the heights. I think cricket हमारी टीम में स्पेशल है, हमारे कंट्री में बहुत स्पेशल है. तो वी रियली वांट के हमारी कंट्री क्रिकेट के नाम से जानी जाए, क्योंकि नॉट ओनली मैन और वीमेन, आई थिंक वी वांट टू कंट्रीब्यूट इक्वली. सो फॉर दैट वी रियली नीड सपोर्ट फ्रॉम आवर फैंस. सो जस्ट come and watch wherever we are playing, and I know you're coming and watching. Just keep coming and keep supporting us. And you know what can be a bigger example in a year where the men's team won the Champions Trophy undefeated? It's the women's team which is ruling the headlines for the most of the year. It was a pleasure to talk to all of you. Thank you so much for talking to NDTV. Pleasure. Thank you. Thank you. Well, there you go. You have seen them all in action. You will continue to see them all in action, and they promise to touch new heights. Thank you for watching.